Hello everyone, my name is Shashikala from Team J. Our project is Website Conversion Optimization. Our team is tackling a critical business challenge for Grafra. Currently, we have visitors, but our goal is to turn those visitors into a high quality leads. To do this, we aren't just guessing what looks good, we are using a data driven framework. We have decided our 7-member team into a specialized tracks covering data infrastructure, business intelligence, and machine learning to predict and recommend changes that will actually move the needle for Grafra's lead generation. One of our biggest hurdles was the small data problem. Manual auditing is slow and prone to human error. To solve this, I have developed an automated data auditing pipeline using Python. Here we have multiple columns for the data which we require for the machine learning part. Then this is the script of Python. Here is the working automated. First is the automated extraction using pandas and beautiful soup. The script crawls Grafra's live URLs to extract structural and technical metadata without manual entry. Then we have heuristics. We aren't just looking at text, we are measuring CTA presence and its positioning by analyzing DOM coordinates. We have also calculated form length to find friction points. Then for smart scoring, I have implemented a content clarity heuristic that calculates the ratio of headings to word counts. This gives a numerical 1 to 5 score on how digestible our content is, which is a key feature for our machine learning model. Then mobile readiness. The script automatically validates viewport meta tags to ensure we are hitting our mobile friendly benchmarks across all service pages. With this script, we have gathered real-world baseline data. However, to prevent underfitting in ML phase, we are expanding this real data into synthetic 500 row data. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फराज काजी। मेरा जो ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम था वो बेसिकली डेटा ऑगमेंटेशन का काम था। हमारे पास जो डेटा हमारी टीम ने जो कलेक्ट किया, वो जो डेटा कलेक्ट करके हम लोग को मिला है वो अप्रोक्सीमेटली 66 रोज का डेटा सेट था। 66 रोज में डेटा सेट के अंदर हम लोग ने डिफरेंट कॉलम्स के वैल्यूज निकाले, जैसे कि पेज नेम, पेज यूआरएल, पेज टाइप, साइट डोमेन, लोड टाइम, परफॉर्मेंस ग्रेड एंड मेनी मोर। तो ये जो डेटा सेट है ये बहुत ही छोटा डेटा सेट है और अगर हम लोग मशीन लर्निंग के ऊपर जाते हैं तो ये डेटा सेट को बड़ा करके हम लोग ने कन्वर्ट किया है इनटू 500 डेटा सेट, जिसको सेमी सिंथेटिक डेटा आप बोल सकते हो। बिकॉज ये डेटा में जो लॉजिक जनरेट हो रहा है वो लॉजिक को यूज करके हम लोग ने रिमेनिंग रोज को प्रेडिक्ट किया है कि ऐसे होने चाहिए। तो वो जो लॉजिक हम लोग ने यूज किया है वो ये पाइथन फाइल के द्वारा यूज किया गया है। जैसे कि रैंडम वैल्यूज प्रेडिक्ट किए गए हैं, मिसिंग वैल्यूज को हटा दिए गए हैं सो दैट सेमी सिंथेटिक डेटा जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसमें भी मिसिंग वैल्यूज ना आ जाए। अलॉन्ग विद दैट, जो लॉजिक एग्जैक्टली यूज हुआ है उसके लिए हम लोग को डिफरेंट साइट नेम चाहिए रहेगा एंड डिफरेंट वेबसाइट का यूआरएल चाहिए रहेगा। उसके लिए हम लोग ने डिफरेंट पूल्स बनाए गए हैं। जैसे कि यूआरएल के लिए हम लोग ने V2 वर्जन्स रखे गए, जैसे सर्विसेज V2, V3, V4। वर्जन्स का मतलब एग्जैक्टली वर्जन नहीं है कि डिफरेंट वर्जन है। वर्जन का मतलब यही है कि वैसे सिमिलर लैंडिंग पेजेस हो सकते हैं, ठीक है, विद द सिमिलर वैल्यूज, ठीक है, रिलेटेड टू सिमिलर वैल्यूज। तो एग्जैक्टली क्या लॉजिक यूज किया गया है वो यहाँ पे लिखा गया है क्लियरली। पेज नेम है, पेज नेम को वर्जन V2, वर्जन V3, वर्जन V4 ऐसा जनरेट किया गया है, ठीक है, सो दैट इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन से ओरिजिनल वैल्यूज है एंड कौन से सेमी सिंथेटिक वैल्यूज है। पेज यूआरएल के लिए भी वही लॉजिक यूज करके ऐसे यूआरएल जनरेट किया गया है। पेज टाइप में हमारे पास कुछ डोमेन थे,
जैसे कि कॉर्पोरेट, इंटर्नशिप एंड शॉप। उसके अंदर हम लोग ने डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है, जैसे इंफॉर्मेशनल पेजेस, फॉर्म्स, रेज्यूमे बिल्डर। एंड लोड टाइम को दो कैटेगरी में रखा गया है मेजोरिटी में। एक है मिली सेकेंड्स में एंड एक है सेकेंड्स में। तो कोई भी वैल्यू अगर लेस देन 1000 है तो उसको मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, एंड कोई भी वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 है तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट किया। अभी हर एक कॉलम की बात करते हैं। जैसे कि परफॉर्मेंस ग्रेट है, तो उसके अंदर हम लोग ने आइडेंटिफाई किया कि कॉर्पोरेट के अंदर 80 टू 100 के बीच में वैल्यूज हम लोग को मिल रहे हैं, एंड उसका एक प्रॉपर लॉजिक नहीं है कि ये वैल्यू तभी जनरेट हो रहा है जब ये हो। तो हम लोग ने आइडेंटिफाई किया कि काम कर लेते, मिनिमम वैल्यू 80 रखते, मैक्सिमम वैल्यू 100 रखते, एंड देन रैंडमली जनरेट करते, बिकॉज वो उतनी एक्यूरेसी देगा। सिमिलर विद दैट इंटर्नशिप के लिए किया गया एंड शॉप के लिए किया गया। देन मोबाइल फ्रेंडली हम लोग ने यस ही रखा गया, बिकॉज अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो जो इजी टू यूज, जो यूजर है जिसके पास मोबाइल का एक्सेस नहीं है, मोबाइल का एक्सेस है, वो तो यूज कर ही नहीं पाएगा। तो हम लोग ने ऑटोमेटिकली जो भी ग्राफोरा की वेबसाइट्स है उसको आइडेंटिफाई किया गया एंड उसमें देखा गया कि मोबाइल फ्रेंडली है हर एक वेबसाइट। तो जो भी रिमेनिंग रोज जनरेट हो रहे हैं इसको भी हम लोग ने ऐसा मोबाइल फ्रेंडली डाला ही है। टॉकिंग अबाउट सीटीए प्रेजेंस, सीटीए प्रेजेंस में हम लोग ने ऑब्जर्व किए कि 93% ऑफ द रोज यस मिल रहा है एंड 7% नो मिल रहा है। देन इंटर्नशिप में 5% में यस मिल रहा है एंड 95% को नो मिल रहा है। शॉप के अंदर भी वैसा ही कैटेगराइजेशन किया। तो जब हम लोग रैंडमाइज कर रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी को यूज करके रैंडम वैल्यू उसके अंदर पुट कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट सीटीए प्रेजेंस, तो सीटीए प्रेजेंट यस कब होगा, जब वो पर्टिकुलर जो पेज वैल्यू है या फिर पोजीशन है वो पर्टिकुलर साइट का, लिंक का, वो मिडल में हो या फिर टॉप में हो। तो अगर वो मिडल और टॉप में रहेगा तो बेसिकली सीटीए प्रेजेंस यस है, वरना सीटीए प्रेजेंस नो है। मतलब कॉल टू एक्शन, मतलब यूजर को कितने जल्दी वो आइडेंटिफाई होगा कि हाँ चलो यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को वो साइट मिल जाएगा। टॉकिंग अबाउट फॉर्म लेंथ, तो ऑब्जर्व किया गया कि बहुत कम ही फॉर्म्स इनपुट करने के लिए प्रेजेंट है। सिर्फ एजुकेशनल जो डोमेन्स है उसके अंदर ही प्रेजेंट है, जैसे वेरीफाई इंटर्न्स करना। ठीक है। कंटेंट क्लैरिटी की बात करेंगे तो 1 to 5 के बीच में वैल्यू जनरेट करने के थे। तो कॉर्पोरेट का हम लोग को जितने एक्चुअल वैल्यूज मिला है उसमें हम लोग ने देखा कि कॉर्पोरेट के अंदर 4 to 5 के बीच में ही एक प्रेजेंट है। ठीक है। देखो, ऑलमोस्ट रोज जो है वो 4 या 5 ही है, मेजोरिटी इधर दिख रहा है। तो 4 और 5 रखा है हम लोग ने कॉर्पोरेट के लिए। देन इंटर्नशिप के लिए 1 to 2 रखा है, शॉप के लिए 2 to 3 रखा है, और रैंडमली जनरेट कर रहे हैं हम लोग बाकी के रोज। तो ये पूरा का पूरा हम लोग ने ऑगमेंट करके प्रॉपर सेमी सिंथेटिक डेटा जनरेट किया गया है, जिसको हम लोग फर्दर मशीन लर्निंग में पुट कर सकते हैं। एंड सेमी सिंथेटिक है, सो क्लोज टू एक्चुअल मशीन लर्निंग प्रेडिक्शन प्रेडिक्ट किया जा सकता है। Hello everyone, I'm Shivangi from Team J. So basically, I have built a Flask based web application and we have integrated the machine learning model using the logistic regression. So we have chosen logistic regression because we can see the logistic regression has the higher accuracy or the high performance, which is 85.60. There are other machine learning models which are random forest and decision tree, but the decision tree has the lowest performance, which is 80.80, and the random forest has 83.20. So therefore we chose logistic regression. Now if we see the predictor, if we analyze our page, we have different page types like the informational pages, internship and recruitment pages, forms, resume builder. Now we have the CTA presence, whether our CTA is present or not. We have the CTA position, form length, the content clarity, like how clear our content is. Then we have performance grade from 0 to 100 and the load time, which is
how much time it is taking to get load. So if we take the forms and our CTA presence, yes, the CTA position is top, the form length is 5, the content clarity is 4, and the performance grade is 75. The load time is 200. Now if we predict our conversion, we see that we get the high conversion, which is 81.22%. So it signifies that our page is well prepared or well optimized for the conversion. Now if we take another page type, which is resume builder, and now our CTA is absent, which is no, CTA is not present. The CTA position is bottom, the form length is 10, content clarity is 5, the load time is 5000, and the performance grade is 100. Now this time if we predict our conversion, we get the lowest conversion. So this model is trained on the features such as CTA performance and CTA position. And these are one of the critical factors in determining whether our page is optimized for the conversion or not. So these are one of the important factors in determining our page is ready or optimized for the conversion. Thank you. Hello everyone, my name is Vedant and today I will be presenting our project website conversion optimization for Graph4 India. So we have analyzed 500 pages across 3 domains to understand where visitors are converting and where they are dropping off. Let's begin. Today we will cover 6 key areas: dataset overview, the 4-stage conversion funnel, domain-wise comparison, root cause analysis, page type performance, and finally our recommendation. So let's get started. Our dataset consists of 500 pages, where Graph4's actual website had only 64 real pages, which were expanded to 500 using data augmentation techniques. These pages span 3 domains: the corporate site with 254 pages, the internship site with 145 pages, and the shop with 101 pages. A clear pattern is already visible at this stage. The corporate site has a CTA rate of 92%, a content clarity score of 4.43 out of 5. Internship site has a CTA rate of only 0.7%, clarity score of 1.7, and average load time of 4 seconds. So this gap explains everything. We will see everything in the analysis ahead. Our funnel analysis consists of 4 stages. First one is entry, exploration, intent, and conversion. Out of 500 pages, only 175 converted, giving us an overall conversion rate of 35%. The most critical drop occurs between stage 3 and stage 4, where 72 intent pages failed to convert, meaning users who were ready to take action were still not converting. The key finding here is that corporate alone is achieving 68.5% conversion rate, internship is at 0%, shop is at 1%. These domains are pulling the overall rate down significantly. So basically, we have now compared domain wise. So this slide presents a direct comparison across all 3 domains. Corporate is at 68.5%, shop is at 1%, and internship is at 0%. Basically, corporate success is driven by 3 factors: 92% CTA presence, excellent content clarity of 4.43, and a load time of approximately 1 second. The internship side is most critical case. Only 1 out of 145 pages has a CTA, and average load time is 4 seconds. The important key takeaway here is that all of these are fixable issue. No major infrastructure changes are required. And what are the root causes? So let us now examine why pages fail to convert, broken down by domain. In corporate, 80% of pages failed because of performance below 85. The fix is here is technical optimization. In the internship side, 100% of pages have a clarity score of below 399, have no CTA, and 83% are slow loading. This is most severe case. However, adding CTS and improving content are quick wins that do not require technical effort. In shop, 91% of pages have a no CTA and 70% has low clarity. Load speed is already good, and so fixes are primarily content and design related.
So basically we have also optimized page type performance. Looking at the page type performance, informational pages and service landing pages are the top performers at 70% and 67% conversion rate. At the bottom we can see forms and resume builder, which are at 0%, and internship and recruitment pages are at 1%. This difference is directly linked to CTA presence and content clarity. Top performing page has a 93% CTA rate and clarity of 4.4%. Bottom page has nearly zero CTA presence and clarity of 1.18. So this confirms that conversion problem is a content and UX problem, not a technical one. This is one of the most significant findings in our analysis. Pages with a clarity score of 1 or 2 have conversion rate of exactly 0 with no expectation. 233 pages, which is 44% of our entire data, fall in this zone and contribute nothing to conversion. Once the clarity score reaches 3, conversions jump to 40%. At score 4 and 5, it reaches nearly 70%. Improving content clarity requires no coding. It is single highest impact action Graphura can take. So basically, what are our key recommendation? Our key recommendations are based on our analysis. We have priority 6 recommendation. First one is like add CTA to all internship pages. Only one out of 145 pages currently has a CTA. Potential impact is like 0 to 30% or more than that. Second one is like improve content clarity to a score of 3 or above, because 233 pages are currently contributing 0 to conversion because of this single issue. Third one is fix internship load speed from 4 seconds to under 1 second through image compression and CDN uses. Fourth one is like add CTS to shop pages. Load speed is already strong. Clear action buttons are all that is needed. Fifth, optimize corporate performance code through a lighthouse audit. Sixth one is like A/B test CTA position as middle placement shows slightly better result in our data. Together, these actions can realistically take Graphura's conversion rate from 35 to 70%. The three most critical actions are add CTS, improve content clarity, and fix load speed on the internship side. With this improvement in a place, 70 plus conversion rate is achievable target for Graphura. That's all from my side. Thank you so much. My name is Ayush Singh, and today I'll be explaining you about the different uh, insights that I have gathered for our project website conversion optimization. So let's begin. So this bar graph here shows the average performance by site domain. So this bar graph shows the performance of each type of domain that we have considered. So we basically have three domains: shop, corporate, and internship. And this bar graph shows the performance of each domain type. This card here presents the CTA in the pages. So about total of 255 website pages do not have a CTA, whereas the remaining 245 have a CTA. Now this pie chart gives us a distribution of site domain. So a total of 254 website pages that we have collected are of corporate domain, whereas 101 are of shop domain, and the remaining 145 is of internship domain. Now the average performance grade of all the pages combined is 88.42, and the average content clarity is of 3 out of 5. Now what is content clarity? Content clarity is basically how effective that website page is in conveying the message they want to convey to the customer. So that's basically content clarity. And all the websites that we have considered are mobile friendly. Coming to this donut chart, this gives a distribution of content clarity. So a total of 146 website pages have a content clarity of 146. 55 have a content clarity of 3. 76 have a content clarity of 4. 101 has a content clarity of 2, and 122 website pages have a content clarity of 1. Now this bar graph here shows the presence of the position of the CTA on the website pages. So 255 pages do not have a CTA in them, whereas 174 website pages have CTA positioned in the middle of the page, whereas the 71 remaining have CTA positioned at the top of the page. So that's all from my